हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लाइव चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइव स्टडी बीएमएस की, जैसे कि पिछले 4-5 वीडियो में किए हैं। तो हम 3 घंटे का अपना चैलेंज पूरा करेंगे आज। चलिए लेट्स स्टार्ट। Normal size, which pushes air out. Multi-sticky and has lysozymes, which are enzymes that help kill bacteria. Nose hairs at the entrance of the nasal cavity get coated with that mucus and are able to trap large particles of dust and pollen as well as bacteria, forming tiny clumps of boogers. The nasal cavity is connected to एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन समझेंगे क्या होता है। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड उसको ब्लड और बेटा 11 पेड़ होते हैं, वो आएगी एल्वोलाई। इंटरकोस्टल मसल कितनी होती है अगली पॉइंट में बताएं। एप्लेटिस में, एल्वोलाई में ब्लड और एल्वोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आपका डाउट जरूर क्लियर। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें
तो उस सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है नोज। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तभी का मैंने चेक which oxygen is taken into the body and carbon dioxide oxygen। अब जो फेटल एक्सपिरेशन कंडक्टिंग जोन वो है इंपॉर्टेंट सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियर एयर की इसको रिलीज तो साइज है वो कम हो जाता है, मतलब जो लंग्स की वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। अब लंग्स की वॉल्यूम कम हुई हो जाती है। अब लंग्स की वॉल्यूम कम हुई तो लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है, और लंग्स का प्रेशर कितना बढ़ता है? लंग्स का प्रेशर देता है 765 mm of Hg, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था? 760 mm of Hg। तो क्या होता है, जो एयर होती है हमारे लंग्स में वो ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करके बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का, समझ आ जाएगा। और ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मैं क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। सांस छोड़ दिया तो क्या वो ले लेगा, वो एक नहीं मालूम वो ब्लड में जो आरबीसी है और ये सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हम लोग अपने कंप्लीट ये तो हमारी ये एयर कंडीशनर की तरह भी काम करता है। देखो जो हमारा हार्ट लग ये राइट है, ये लेफ्ट है, इट इज आल्सो नोन एज एक्चुअलिज्म। और आप लोगों ने ना मूवीज में बहुत बार ये सीन देखा। वेलकम टू आरज मेडिकल एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सबको फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एंड ये एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एंड इन केमिकल रिएक्शंस की अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। एंड ये ऑक्सीजन कैसे मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स का एक वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही बाहर निकल जाती है। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जो कि ऑक्सीजन को एंटर करवाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करवाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। सो हमारी बॉडी में टू रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, फर्स्ट है ऑक्सीजन एंड सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। सो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऑल्सो जब हम ब्रीथ लेते हैं सो फर्स्ट ब्रीथ हमारी बर्थ के बाद होती है। इट मींस जब बेबी क्राई करता है फर्स्ट टाइम बर्थ के बाद तब वह फर्स्ट ब्रीथ लेता है। इसका मतलब है कि बेबी जो मदर की वोम में प्रेजेंट है तब वो अपने आप से ब्रीथ नहीं लेता क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इतना मैच्योर नहीं होता। तो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की वोम में से रेस्पिरेटरी गैसेस ही एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है नॉर्मल? एक एडल्ट पर्सन में अगर हम देखें, एक हेल्दी एडल्ट में, तो उसका नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। दैट रेस्पिरेशन के टू टाइप्स होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल
लंग्स और ब्लड के बीच में होता है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में होता है? ये होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के 2 फेजेस हैं। इट्स द एक्सचेंज ऑफ oxygen and carbon dioxide between blood and tissues. अब phases of respiration, respiration के 2 phases हैं, inspiration and expiration. Inspiration का क्या मतलब है? Air को inspire करना यानी अंदर लेना. When air enters the lungs from atmosphere, air जब अंदर जाती है atmosphere से body में, इसको बोलते हैं inspiration. ये एक active process है, इसमें energy लगती है, active process है. एक्सपीरेशन क्या होता है? एक्सपीरेशन इज एयर लीव्स द लंग इनटू एटमॉस्फेयर। जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं बॉडी से एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं बॉडी से एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एक्सपीरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन-कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, जिनको ऑल टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट है नेजल कैविटी या फिर नोज, देन उसके बाद आता है फैरिंक्स, फैरिंक्स के बाद आता है लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सो लैरिंक्स तक ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ से लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया से शुरू हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो ये है ट्रैकिया, लॉन्ग विंड पाइप बोलते हैं जिसको। देन ट्रैकिया बाइफिकेट यानी डिवाइड हो जाता है। Imagine yourself high above New York City, looking down at its iconic skyline. जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, जिसको प्लूरल बोलते हैं ब्रोंकाई एंड होती है, उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन-कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी होते हैं बॉडी से एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन, जो कि पैसिव प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल एनर्जी का यूज नहीं होता। नाउ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन-कौन से ऑर्गन्स
बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। सो ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व है, जिनको ऑल टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नोज से स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट है नेजल कैविटी या फिर नोज, देन उसके बाद आता है फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद आता है लैरिंक्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सो लैरिंक्स तक ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब यहाँ से लैरिंक्स से नीचे ट्रैकिया से शुरू हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो ये है ट्रैकिया, लॉन्ग विंड पाइप बोलते हैं जिसको। देन ट्रैकिया बाइफिकेट यानी डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, जिसको प्लूरल बोलते हैं ब्रोंकाई, एंड जब ये सिंगुलर बोलते हैं इसको ब्रोंकस। सो राइट ब्रोंकस राइट लंग में जाता है एंड लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में। देन ब्रोंकस फर्दर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स है स्मॉलर एयर पैसेजेस। देन ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्वेलाई में। सो एल्वेलाई या एयर सैक्स इनको बोलते हैं, जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है। एंड ये है टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। एंड ये है मसल्स डायफ्राम, जो कि एक्सपीरेशन या इंस्पिरेशन करने में हेल्प करते हैं। मसल्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। सो फर्स्ट है नोज, सेकंड फेरिंक्स, थर्ड लैरिंक्स। सो ये तीनों बनाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन ट्रैकिया एंड देन टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, हर ब्रोंकाई ईच लंग में जाती है। सो हम इसको बोलते हैं ब्रोंकस सिंगुलर में, टू ईच लंग। ट्रैकिया और ब्रोंकाई को मिलकर बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, क्योंकि ये एक तरह से एक ट्री जैसा लगता है, ब्रांचेस है ना ब्रोंकाई की, तो इसलिए इसका नाम है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। देन ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। ब्रोंकाई देन ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है ये जो ब्रांचेस है, एंड देन एल्वेलाई, इनको बोलते हैं स्मॉलर एयर पैसेजेस, क्योंकि ये बहुत स्मॉल एंड माइन्यूट होती है। देन टू लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। देन प्लूरा, जो कि लंग्स की कवरिंग है, यहाँ पर कवरिंग में प्रेजेंट होता है प्लूरा। प्लूरा लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, लुब्रिकेट करता है, फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है। लास्ट है मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। टू मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, जो कि ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, इंस्पायर एंड एक्सपायर करने में हेल्प करते हैं। सो ये है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज रेस्पिरेटरी इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम?
ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई है, इनको टुगेदर बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स, लंग पैरेन्काइमा, दैट इज द टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो हमने पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा था, उसका टर्मिनल पोर्शन क्या था कि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होती है हर लंग में। सो ब्रोंक्यूल्स देन आगे एल्वेलाई में। सो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई को बोलते हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जहां पर होता है, जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है मींस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाइज में होता है। किडनी किसी भी कारण से फेल हो गई हो डायलिसिस के दौरान, बच्चों में बताना चाहिए होता है। सो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, जो कि रेस्पिरेशन मेन जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स देन एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होती है। एल्वियोलर डक्ट्स के एंड पे क्या अटैच है, एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक एक बंच ऑफ एल्वियोलाई है जिनमें बहुत सारी एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है। सो ये ऑल टुगेदर ये है एल्वियोलर सैक्स, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई। इसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई को रेस्पिरेटरी यूनिट। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। अब आपको पता है कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो किस में होता है, लंग्स मींस एल्वियोलाई में और ब्लड में। सो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो है एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड ब्लड जिसके थ्रू आ रहा है वो है ब्लड कैपिलरीज। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन दोनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है जहां पर मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है मींस एल्वियोलाई में और ब्लड में। सो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है वो है एल्वियोलर मेम्ब्रेन एंड ब्लड जिसके थ्रू आ रहा है वो है ब्लड कैपिलरीज। सो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और ब्लड कैपिलरी मेम्ब्रेन, इन दोनों को बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो कि थिन मेम्ब्रेन होती है जहां पर मेन गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चल जाती है एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी यूनिट। नाउ व्हाट आर वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है
Now, what are the different functions of respiratory tract? So, respiratory tract के following functions हैं. Main function इसका है वो है gas exchange. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करना. सो दिस इज अ मेन फंक्शन गैस एक्सचेंज. सेकंड है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर. तो जो हम एयर इंस्पायर करते हैं, अंदर लेते हैं, वो वार्म भी हो सकती है, कूल भी हो सकती है, ड्राई, मॉइस्ट, कैसे भी हो सकती है. सो जैसे ही वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो वार्म होती है. वार्म कैसे होती है? जैसे जो हमारा नॉस्ट्रिल्स है, नोज है, वहाँ पर नेजल म्यूकोसा प्रेजेंट है जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है. सो रिच ब्लड सप्लाई की वजह से वहाँ पर जो भी एयर एंटर होती है नोज में वो वार्म हो जाती है. प्लस ह्यूमिडिफाइंग एयर का मतलब है जो भी ड्राई एयर है वो सबसे पहले मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिफाइंग एयर. सो मॉइस्चर कैसे ऐड होता है? म्यूकोसा के थ्रू. जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करती है एंड ह्यूमिडिफाई करती है ताकि ड्राई एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोई भी प्रॉब्लम कोज ना करे. थर्ड है ऑल्फैक्शन. ऑल्फैक्शन का मतलब है सेंस ऑफ स्मेल. सो जो हमारा नॉस्ट्रिल है, नोज है, वहाँ पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को सेंस करते हैं. देन वोकलाइजेशन. वोकलाइजेशन का मतलब है बोलना. सो स्पीच में हमारा जो मेन रोल है वो है लैरिंक्स का, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. अदरवाइज फैरिंक्स भी हेल्प करते हैं और ऑर्गन्स, टंग एंड ऑल बाकी बहुत सारे ऑर्गन्स जो है स्पीच में हेल्प करते हैं, लेकिन मेन रोल जो है वोकलाइजेशन में वो है लैरिंक्स का. देन है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल. जो भी एयर हमारी बॉडी में एंटर होती है नोज के थ्रू, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं. सो डस्ट पार्टिकल कैसे प्रिवेंट होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर में वो डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं. अगर वहां से भी डस्ट पार्टिकल निकल गए तो म्यूकस मेम्ब्रेन में वो चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं. देन अगर वहां से भी वो एस्केप हो जाते हैं तो एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं. अगर इन तीनों प्रोसेस से भी डस्ट पार्टिकल्स अंदर हमारी बॉडी में चले जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, देन दो प्रोसेस है कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स. इसके थ्रू क्या होता है? कफिंग रिफ्लेक्स, कफ करते हैं, खांसी करते हैं, छींक मारते हैं, उसके थ्रू डस्ट पार्टिकल जो फोर्सफुली बाहर एक्सपायर हो जाता है. ये कैसे होता है? कफ रिफ्लेक्स या स्नीज रिफ्लेक्स. ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसका एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है, प्रोसेस है. जैसे हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं, दैट फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ते हैं, दैट इज कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स. इससे जो भी अंदर डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे ही या फिर किसी म्यूकस में चिपक कर वो बाहर निकल जाते हैं. देन है थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म. हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लंग्स है, उसका ओन डिफेंस मैकेनिज्म भी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन के साथ फाइट करता है. या फिर एल्वेलाई में मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करते हैं, एंटीजन के साथ फाइट करते हैं. देन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस. हमारी बॉडी में जब CO2 लंग्स के थ्रू एक्सपायर होती है, जब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी साथ में एक्सपीरेशन में लॉस होता है बॉडी से, वो भी थोड़ा सा बाहर निकलता है. सो वाटर के बैलेंस को भी रेगुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. जब हम एक्सपायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर तो लॉस होता ही है, साथ में हीट भी लॉस होती है. सो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रेगुलेट करता है. देन है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सपायर करते हैं, सो कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल का ज़्यादा फास्ट हो गया है, सो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बाहर एक्सपायर करते हैं, सो इसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस मेंटेन होता है. पीएच जो है बॉडी का वो मेंटेन रहता है. देन इज स्वेलिंग और डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स. स्वेलिंग या फिर डीग्लूटेशन रिफ्लेक्स क्या है? जब हम फूड को स्वेलो करते हैं उस टाइम पर फॉर अ वाइल टेम्पररी क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, उसका प्रोसेस टेम्पररी स्टॉप हो जाता है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए. सो फॉर अ वाइल इसका क्या फायदा है कि जब हम फूड स्वेलो करते हैं कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना हो जाए, इसलिए उसको बोलते हैं स्वेलोइंग एपनिया. थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी जो है रेस्पिरेशन का स्टॉप होना, उसको बोलते हैं स्वेलोइंग एपनिया या डीग्लूटेशन एपनिया. इसका यही फंक्शन है कि ये स्वेलोइंग के टाइम पर फूड
माइंड में ना चला जाए उसके लिए ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आई so please like, subscribe and share my channel. Also to support women empowerment. Thank you for watching. My teachers in Akash have been very, very helpful. Modules, schedules. Hello friends, welcome to RJ Medical Education. आज का हमारा टॉपिक है नोज या नेजल कैविटी। सो नोज एंड नेजल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर इन रेस्पिरेशन और वेदर इन स्मेल। सो स्मेल और रेस्पिरेशन दोनों में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। सो रेस्पिरेशन में कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले एयर जो है नोज में ही एंटर होती है, देन वो आगे फैरिंक्स और अदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पास होती है। सो नोज से एयर जब एंटर होती है वो वार्म होती है, ह्यूमिडिफाई होती है एंड क्लीन यानी फिल्टर होकर आगे पास होती है। सो ये फर्स्ट रूट है एयर एंट्री का, फर्स्ट एंड मेन रूट है एयर एंट्री का नोज। इनसाइड ऑफ नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पैसेज नॉस्ट्रल बाय अ नेजल सेप्टम। अब ये है नोज, नोज के इनसाइड एक नेजल सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये नेजल सेप्टम एक तरह से डिवाइडर का काम करता है जो कि नोज को टू नोस्ट्रिल्स में या टू नेजल कैविटीज में डिवाइड करता है। सो नोज टू कैविटीज में डिवाइडेड है विद द हेल्प ऑफ नेजल सेप्टम और इन टू कैविटीज को बोलते हैं नोस्ट्रिल्स या नेयर्स बोलते हैं। अब ये नेजल सेप्टम किसका बना हुआ है? ये नेजल सेप्टम बोन और कार्टिलेज का बना हुआ है। सो बोन और कार्टिलेज में यही डिफरेंस है कि वैसे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू से ही बने हैं, लेकिन बोन एक हार्ड सब्सटेंस है, टफ होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। सो ये बोन एंड कार्टिलेज से नेजल सेप्टम बना हुआ है। देन है बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी, टफ होता है, लेकिन कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। सो ये ऑर्गन्स में पास होती है। सो नोज से एयर कनेक्ट होती है, वो वार्म होती है, ह्यूमिडिफाई होती है एंड क्लीन या फिल्टर होकर आगे पास होती है। सो ये फर्स्ट रूट है एयर एंट्री का, फर्स्ट एंड मेन रूट है एयर एंट्री का नोज। Inside of nose is divided into two passage nostril by a nasal septum. टफ होता है। हेल्थ केयर में कुछ बड़ा करना है, पेशेंट्स की लाइफ सेव करनी है तो सुनो फिजिक्स वाला इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन स्कूल ऑफ हेल्थ केयर आपके पैशन को पावर दे। डिफरेंस है कि वैसे तो दोनों कनेक्टिव टिश्यू से ही बने हैं, लेकिन बोन एक हार्ड सब्सटेंस है, टफ होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या है, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट होता है। सो ये बोन एंड कार्टिलेज से नेजल सेप्टम बना हुआ है। देन है बोन सराउंडिंग द नेजल कैविटी। अब जो नेजल कैविटी या नोज है, इसको कौन कौन से स्ट्रक्चर या बोन्स सराउंड किए हुए हैं, इसके
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो पहले तो मैं ये बता दूं, ये है लेटरल व्यू ऑफ नोज। ये नोज का लेटरल व्यू है या नेजल कैविटी का। सो जो नोज का ऊपर का पार्ट है, मतलब जो रूफ है, वो मोस्टली बोन से बनी हुई है, और जो फ्लोर है यानी नीचे वाला पार्ट बिलो, वो मोस्टली कार्टिलेज से बना है। सो रूफ की अगर बात करेंगे, यानी नोज का जो ऊपर वाला पार्ट है, छत, रूफ, उसकी बात करेंगे, वहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? 4 बोन्स प्रेजेंट है, एथमॉइड बोन, स्फिनोइड, फ्रंटल एंड नेजल बोन। सो ये है नेजल बोन फ्रंट में, देन फ्रंटल बोन, एथमॉइड बोन एंड स्फिनोइड बोन। सो ये चारों बोन्स ऊपर से नेजल कैविटी को कवर किए हुए हैं, सराउंड किए हुए हैं। देन है फ्लोर। फ्लोर यानी नीचे वाला पोर्शन जो है नोज का, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? अब फ्लोर को कवर कर रही है रूफ ऑफ द माउथ, क्योंकि माउथ के ऊपर प्रेजेंट है नेजल कैविटी, इसलिए जो रूफ है माउथ की, छत, जो ऊपर वाला पार्ट है माउथ को, वो नीचे से यानी फ्लोर से नेजल कैविटी को कवर किए हुए हैं। सो माउथ में ये है माउथ। माउथ में जो फ्रंट में प्रेजेंट होता है, ये होता है हार्ड पैलेट, एंड पीछे उसके हार्ड पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है सॉफ्ट पैलेट। अगर आप अपनी टंग को ऊपर टच करें ऐसे करके, तो ऊपर है हार्ड पैलेट और पीछे है सॉफ्ट पैलेट। सो हार्ड पैलेट बना हुआ है मैक्सिला और पैलेटाइन बोन से। सो ये आप रूफ में फ्लोर में देख सकते हैं नेजल कैविटी की फ्लोर यानी नीचे। सो ये है मैक्सिला बोन एंड ये है पैलेटाइन बोन, जो कि हार्ड पैलेट को बना रहा है। सो फ्लोर में ये प्रेजेंट है, एंड साथ में है सॉफ्ट पैलेट, जो कि पीछे प्रेजेंट है। सॉफ्ट पैलेट इनवॉल्यूटरी मसल से बना हुआ है। देन है मीडियल वॉल। सो नोज को जो मीडियल वॉल है वो है नेजल सेप्टम। सो नेजल सेप्टम से मीडियल वॉल बनी हुई है। देन लेटरल वॉल, साइड में क्या क्या प्रेजेंट है? मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के। सो मैक्सिला, एथमॉइड बोन एंड इंफीरियर कॉन्के, ये लेटरल वॉल को कवर कर रहे हैं। सो लेटरल की साइड। अब ये जो कॉन्के हैं, इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। सो कॉन्के बेसिकली मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये नोज के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो एयर का फिल्टर एंड ऑल है वो अच्छे से हो सके। देन है पोस्टीरियर वॉल, पीछे क्या प्रेजेंट होता है? सो नोज के पीछे जो प्रेजेंट है वो है फेरिंक्स, जिसको नेजोफेरिंक्स भी कहते हैं, क्योंकि नोज के पीछे नेजल कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है जो फेरिंक्स, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंक्स। नाउ व्हाट इज पैरानेजल? सो नोज के पीछे जो प्रेजेंट है वो है फेरिंक्स, जिसको
पीछे कैविटी के पीछे प्रेजेंट होता है जो फेरिंक्स, उसको बोलते हैं नेसोफैरिंक्स। नाउ व्हाट इज पैरानेसल साइनसेस? सो पैरानेसल साइनसेस या सिंपली साइनसेस क्या होते हैं? द बोन्स ऑफ द फेस अराउंड द नोज कंटेन होलो स्पेसेस। सो ये नोज के अराउंड बहुत सारे बोन्स प्रेजेंट हैं। इन बोन्स में होलो स्पेसेस यानी खाली स्पेस या होल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं साइनसेस या पैरानेसल साइनसेस, क्योंकि ये नोज के सराउंडिंग बोन्स में प्रेजेंट है। सो ये जो होलो स्पेसेस है जिनमें एयर फिल रहती है, सो ये होलो स्पेसेस का फंक्शन क्या है? ये एक्चुअली जो स्कल बोन्स है, फेस के बोन्स है, उनको लाइटन करने में हेल्प करता है। सो देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ पैरानेसल साइनसेस। 4 साइनसेस प्रेजेंट होते हैं: मैक्सिलरी साइनस, एथमॉइड साइनस, फ्रंटल साइनसेस, स्फेनॉइड साइनसेस। सो जो फ्रंटल बोन में साइनस प्रेजेंट है, होलो स्पेस प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं फ्रंटल साइनसेस। एथमॉइड बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एथमॉइड साइनसेस। सिमिलरली स्फेनॉइड बोन में जो साइनस प्रेजेंट है उनको स्फेनॉइड साइनसेस। एंड मैक्सिलरी बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। सो एज पर द बोन्स, जिन बोन्स में ये साइनस प्रेजेंट है वैसे ही उनके नेम्स हैं। सो 4 पैरानेसल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल। अगर एक बंद का जिन बोन्स में ये साइनस So there are 4 groups of paranasal sinuses. वो है pharynx. Sinuses क्या होते हैं? The bones of the face around the nose contain hollow spaces. So ये nose के around बहुत सारे bones present हैं. इन bones में hollow spaces यानी खाली space या holes present होती हैं, जिनको हम बोलते हैं sinuses. 4 sinuses क्योंकि ये nose के सराउंडिंग बोन्स में प्रेजेंट है। सो साइनसेस, सो जो फ्रंटल बोन में साइनस प्रेजेंट, एक बंद कमरा हो जिसमें क्लोज होगी और जो रूम का जो प्रेशर है वो लाइट रहेगा।
रहेगा। इसलिए ये फेस साइनसेस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं एथमॉइड साइनसेस। सिमिलरली स्फेनॉइड बोन में जो साइनस प्रेजेंट है उनको स्फेनॉइड साइनसेस एंड मैक्सिलरी बोन में जो साइनसेस प्रेजेंट है उनको बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। सो एज पर द बोन्स जिन बोन्स में साइनस प्रेजेंट है वैसे ही उनके नेम्स हैं। सो 4 पैरानेसल साइनसेस प्रेजेंट होती है। अब इनका फंक्शन क्या है? रिड्यूस द वेट ऑफ फेशियल बोन एंड स्कल। अगर एक बंद कमरा हो जिसमें कोई भी खिड़की ना हो सो उसका प्रेशर इंक्रीज होगा कमरे का। अगर वही हम कमरे के विंडोज लगा दें या खिड़कियाँ लगा दें तो जो एयर है वो आपस ऐसे क्रॉस होगी और जो रूम का जो प्रेशर है वो लाइट रहेगा। इसलिए ये फेशियल बोन्स और स्कल्स में ऐसे होलो स्पेसेस है जो कि इन बोन्स का जो वेट है उसको रिड्यूस करते हैं, उनको लाइट बनाते हैं। मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप एज वेल एज ये बोन की स्ट्रेंथ और शेप को भी मेंटेन करके रखती है। एयर फील्ड स्पेसेस एंड रेजोनेंस टू वॉइस। हम जब बोलते हैं तो भी इन साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी वॉइस को। इसकी जो क्वालिटी है वॉइस की वो इंक्रीज करती है। नाउ व्हाट आर नेजल कॉन्केव वॉइस? हम जब बोलते हैं तो भी इन साइनसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारी वॉइस को। इसकी जो क्वालिटी है को इंक्रीज करती है। नाउ व्हाट आर नेजल कॉन्केव? सो नेजल कॉन्केव क्या होते हैं? प्लूरल में इसको बोलते हैं कॉन्केव एंड सिंगुलर इसका वर्ड है कॉन्का। सो नेजल कॉन्केव का दूसरा नाम है टर्मिनेट्स। नेजल टर्मिनेट्स भी इनको बोलते हैं। बोन्स फॉर नेजल कॉन्केव प्रोजेक्ट्स इनटू द नेजल कैविटी फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ पोर्स। तो ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। प्रोजेक्शन या फोल्ड्स जो कि बोन से ही बनी होती है। ये जो फोल्ड्स हैं ये फोल्ड्स है ये बोन से ही बने हुए हैं जो कि नेजल कैविटी के अंदर प्रोजेक्ट हुए हैं। सो इनको ये सीरीज ऑफ फोल्ड्स को कहते हैं नेजल टर्मिनेट्स या फिर नेजल कॉन्केव। इनका फंक्शन क्या है? सिस्टम में वो एयर हीट हो जाए, वार्म हो जाए और उसमें मॉइस्चर हो जाए। क्योंकि ड्राई एयर या कूल एयर अंदर नहीं जा सकती, उसको पहले नोज में ही नेजल कॉन्केव क्या करते हैं, नेजल कैविटी में हीट एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि जो एयर है वो वार्म हो जाए एंड जो ड्राई एयर है वो मॉइस्चराइज हो जाए। ये कैसे होती है? क्योंकि नेजल कैविटी के अंदर नेजल कॉन्केव में क्या प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन। सो म्यूकस
रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पर जो कूल एयर है वो हीट हो जाती है या वार्म हो जाती है। सेकेंड थिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि ड्राई एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब 3 नेजल कॉन्की होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। तो ये सबसे ऊपर जो है ये सुपीरियर कॉन्का है, देन मिडल ये जो फोल्ड है इसको मिडल कहते हैं, सबसे नीचे वाला है इंफीरियर कॉन्का। सो ये सभी फोल्ड्स जो है बोन्स के ही फोल्ड है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पर जो कूल एयर है वो हीट हो जाती है या वार्म हो जाती है। सेकेंड थिंग, म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि ड्राई एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। अब 3 नेजल कॉन्की होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर। सो ये सबसे ऊपर जो है ये सुपीरियर कॉन्का है, देन मिडल ये जो फोल्ड है इसको मिडल कहते हैं, सबसे नीचे वाला है इंफीरियर कॉन्का। सो ये सभी फोल्ड्स जो है बोन्स के ही फोल्ड है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नोज? नोज कौन-कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है? सो नोज की जो लाइनिंग है, नेजल कैविटी की जो लाइनिंग है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो नेजल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है। इसका मतलब है कि नेजल कैविटी के अंदर क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर लाइनिंग में प्रेजेंट है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन में एक तो ये सीलिया प्रेजेंट होती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इनको बोलते हैं सीलिया। सो ये कॉलम्नर एपिथेलियल लेयर है जो कि नोज को लाइन करती है, उसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये है गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। सो म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि नोज की लाइनिंग से सिक्रीट होता है, गॉबलेट सेल्स उनको सिक्रीट करते हैं। एंड इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, एंड ये है म्यूकस लेयर जो कि म्यूकस सिक्रीट कर रही है। सो फंक्शंस ऑफ नोज क्या है? एक तो हमें फंक्शन पता ही है कि ये स्मेल में वर्क करता है, ये स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी फंक्शन है इसका। बाकी जो 3 फंक्शन है वो है रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एयर एंटर होती है नोज में तो ये वार्म करता है एयर को। सो जो कूल एयर है, कैसे भी टेम्परेचर की एयर है उसको वार्म कैसे करता है कि ये जो म्यूकस लेयर है नोज में, इसमें रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है, रिच ब्लड वस्कुलैरिटी प्रेजेंट है, जिसके कारण जब एयर यहाँ से पास होती है तो ये वार्म हो जाती है। देन फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग एयर। फिल्टर या क्लीन कैसे करते हैं एयर को? जब एयर यहाँ से पास होती है, सबसे पहले हमारे जो नोज में फ्रंट में प्रेजेंट है हेयर्स, हेयर प्रेजेंट है। हेयर में जो भी बड़े पार्टिकल्स हैं डस्ट के या फिर कोई इंसेक्ट या समथिंग वहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। उसके बाद अगर जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स हैं वो म्यूकस लाइनिंग में चिपक जाते हैं, या फिर ये जो सीलिया है, सीलिया म्यूकस में चिपक जाते हैं। सो ये जो है यहाँ पर सीलिया में चिपक के जब सीलिया इरिटेट होती है तो हम स्नीजिंग करते हैं, छींक मारते हैं ताकि वो बाहर निकल जाए विद म्यूकस, कोई भी डस्ट पार्टिकल। देन है मॉइस्चर एयर। अब जब ग्लूकोजा है ये एक तरह का मॉइस्चर है, जब एयर यहाँ से पास होती है सो ड्राई एयर में क्या होता है, जब ग्लूकोजा से एयर पास होती है ड्राई एयर में मॉइस्चर या वाटर वेपर ऐड हो जाते हैं, जिसके कारण जो एयर है वो मॉइस्चर हो जाती है, जिसको ह्यूमिडिफिकेशन भी कहते हैं। सो ह्यूमिडिफाइड एयर, एयर का ह्यूमिडिफाइड होना कैसे होता है? जब वो म्यूकस लेयर से पास होती है। देन स्मेल यानी ऑल्फैक्टरी फंक्शन, वो कैसे परफॉर्म होता है? जो नोज है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल को सेंस करती हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ नोज। अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय I just deleted ChatGPT and Claude and Gemini and Grok. When I'm working on something and need a real answer, I don't have time to bounce between apps. 4 apps, 4 login. Hello friends, welcome to
रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेन ऑर्गन है जिसके थ्रू एयर जो है आगे लंग्स में पास होती है। सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूडेड है लैरिंक्स। देन ये ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये है लैरिंक्स रेड कलर का, ये एक ट्यूब शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंड कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है। इट मींस ये कार्टिलेजेस से बना हुआ है। नाउ व्हाट इज कार्टिलेज? सो कार्टिलेज एक सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में, कई एरियाज में प्रेजेंट होता है। वैसे इसका मेन फंक्शन है बोन को बोन से जोड़ना, लेकिन ये बहुत सारे कई एरियाज में प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। बोन के कंपैरिजन में कार्टिलेज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। वैसे तो ये भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बोन जो है ज्यादा टफ है, बोन सॉफ्ट नहीं है, लेकिन कार्टिलेज ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल है। सो इसमें बहुत सारे कार्टिलेज है लैरिंक्स में, ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम के बारे में सीरियस हो और अगर आप 2026 या 2027 में एग्जाम देना चाहते हो, यू नीड टू स्टार्ट नाउ। एशिया लैरिंक्स में ये हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रेजेंट एंटीरियरली इन द नेक, सो ये नेक में हमारे फ्रंट में प्रेजेंट है, एंटीरियर मतलब आगे फ्रंट में हमारे नेक में प्रेजेंट है। लोकेशन बिटवीन फैरिंक्स एंड ट्रैकिया, सो ये है लैरिंक्स एंड इसके ऊपर प्रेजेंट है फैरिंक्स एंड इसके नीचे प्रेजेंट है ट्रैकिया। सो ये फैरिंक्स और ट्रैकिया के बीच में लोकेटेड है। सस्पेंडेड फ्रॉम द हायोइड बोन एंड सर्वाइकल वर्टिब्रा C3 to C6। अगर हम इसकी स्पेसिफिकली लोकेशन देखें तो टंग के पीछे प्रेजेंट होता है हायोइड, टंग की जो रूट है वहाँ प्रेजेंट है हायोइड बोन। हायोइड बोन से ये स्टार्ट हो जाता है लैरिंक्स एंड C3 मतलब जो थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा है वहाँ से लेके 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसने कवर किया हुआ है। तो C3 to C6 थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा को इसने कवर किया हुआ है। इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है अप्रॉक्सीमेटली, और जो इसका साइज है वो बिफोर प्यूबर्टी मेल और फीमेल में सेम रहता है अप्रॉक्सीमेटली, बट आफ्टर प्यूबर्टी क्या होता है कि जो मेल है उसमें इसका साइज ज्यादा प्रोमिनेंट ज्यादा बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू फीमेल्स। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद लैरिंक्स, अब लैरिंक्स के साथ साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है, मींस ऊपर कौन से स्ट्रक्चर है, नीचे आगे पीछे साइड्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर इसको सराउंड किया है।
अब हम थोड़ा सा गुड़ रिवीजन कर लेते हैं। गुड़ की व्युत्पत्ति, गुड़ आमंत्रणे, गुड़ आमंत्रणे। इस धातु से गुड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है। गुड़ शब्द किस चीज़ से उत्पन्न हुआ है? तो गुड़ आमंत्रणे से। निरुक्ति गुण्यते आमंत्रते लोक अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। लोके अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। आमंत्रते आमंत्रते अनेन इति गुणा। गुण्यते गुण्यते मंत्रते अनेन इति गुणा। लोके है लोके अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते अनेन इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। इस कारण जिसके कारण लोक या लोकगत लोक द्रव्य की ओर आकर्षित होता है उसे गुण कहा जाता है। इसके कारण जिसके कारण जो है लोकगत लोक द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहा जाता है। गुण्यते मंत्रते इति गुणा। गुण्यते आमंत्रते लोके अनेन इति गुणा। गुण्यते मंत्रते 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 अनेन गुणा।
गुण की व्युत्पत्ति गुण आमंत्रण निरुक्ति गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुण गुण्यते मंत्रते इति गुण। गुण की व्युत्पत्ति गुण आमंत्रणे और गुणे गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुण गुण्यते मंत्रते इति गुण। गुण के लक्षण पहले तो ये वाला याद है, समवाय तो निश्चेष्टा कारणम गुणाक्षर के अनुसार द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागवान कारणमन अपेक्ष इति गुण। गुणलक्षणम विश्वलक्षण गुण। विश्वलक्षण गुण द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग योन कारणम अनपेक्ष कारणमन अपेक्ष इति गुण। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग योन कारण मन अपेक्ष इति गुण लक्षणम। द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभाग योन कारणम मन अपेक्ष गुण लक्षणम इति गुण लक्षणम। द्रव्य के आश्रय से रहने वाला आगुणवान द्रव्य आश्रय आगुणवान संयोग विभाग में कारण न हो अनपेक्ष होकर अनपेक्ष कारणम अनपेक्ष होकर यह गुण का लक्षण है। द्रव्याश्रयी आगुणवान संयोग विभाग योन कारण अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। ठीक है। द्रव्य आश्रय गुण स्वतंत्र नहीं रहता है, सदैव द्रव्य में आश्रित रहता है। मतलब द्रव्य आश्रय मतलब द्रव्य में आश्रित रहता है। आगुणवान मतलब गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, अगुण का कोई अपना गुण नहीं होता, ये आगुणवान होता है। संयोग विभाग यौन कारण गुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता है, अनपेक्ष कारण नहीं होता है। इसमें संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता है। ठीक है। समवाय तो निश्चेष्टा कारणम गुण। समवाय निश्चेष्टा कारणम गुण। समवाय को निश्चेष्टा कारण गुण, जो समवाय हो चेष्टा रहित हो और कारण उसे गुण, जो समवाय कारण से हो और चेष्टा रहित हो, जिसका कारण समवाय हो और चेष्टा रहित हो, जिसका कारण समवाय हो और चेष्टा रहित हो उसे हम गुण कहते हैं। ठीक है। समवाय मतलब जो अध्याय हो, मतलब किसी के आश्रित रहता हो। समवाय मतलब किसी के आश्रित में रहता हो। निश्चेष्टा जिसमें कोई भी चेष्टा ना हो। कारण गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवाय कारण है। गुण जो है अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवाय कारण है। असमवाय गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवाय कारण है। जो समवाय हो चेष्टा रहित और कारण है। ये थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। इसमें तो कारण समवाय दिया गया है, जब वृद्धि में असमवाय कारण है। गुणवत्व जाति वाले को गुण कहते हैं, गुणत्व जाति वाले को गुण कहते हैं। इसके श्लोक में आप रहेंगे। विश्व लक्षणा गुणा, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं। जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं। विश्व लक्षण गुणा, विश्व लक्षण
गुड़ा जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुड़ कहते हैं। गुड़ के लक्षण के 3 श्लोक क्या हुए? पहला द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभाग योन कारणम अनपेक्ष इति गुण लक्षणम। ठीक है। दूसरा है संवाहितु निश्चेष्टा कारणम गुणा। तीसरा है विश्व लक्षण गुण। अब गुणों के वर्गीकरण संख्या देखेंगे। चरक के अनुसार 41 गुण बताए गए हैं। सार्था गुरुवादो बुद्धि प्रज्ञाता परादया गुणा परोक्ता। सार्था गुरुवादयो सार्था गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नाता परादय गुणा परोक्ता। चरक के हिसाब से चरक के हिसाब से 41 गुण हैं। सार्था गुणोदय बुद्धि प्रयत्नता पराधन गुण प्रोक्ता। सार्थ गुण 5, गुरुवादि गुण 20, बुद्धि प्रज्ञाता 6, परादि गुण 10। सार्थ 5, गुरुवादि गुण 20, बुद्धि यानी आध्यात्मिक गुण 6, परादि गुण 10। गुरुवादि गुण 20, आध्यात्मिक गुण 6, परादि गुण 10। सार्थक गुण 5, गुरुवादि गुण 20 और आध्यात्मिक गुण 6 और परादि गुण 10, टोटल 41। अब देखते हैं कौन कौन है। सार्थक गुण कौन, गुरुवादि गुण कौन और आध्यात्मिक गुण और परादि गुण के नाम। सार्थ गुण में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मतलब ये 5 संमात्राएं सार्थ गुण में आ जाएंगी। और 6 इसमें कौन से आध्यात्मिक गुण है? बुद्धि, अच्छा सुख दुख इच्छा द्वेष बुद्धि और प्रयत्न। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न। ठीक है। परादि गुण में पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग, संख्या संयोग विभाग युक्ति पृथकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास। पर अपर युक्ति संयोग संख्या विभाग परत्व अभ्यास परिमाण संस्कार। पृथकत्व परिमाण संस्कार। पर अपर युक्ति संयोग संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण अभ्यास। संस्कार भी है संस्कार। पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास। ठीक है, ये चारों याद होगा। शब्द सार्थ गुण का शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आध्यात्मिक गुण बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और परादि गुण का प्रत्य अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिमाण संस्कार और अभ्यास। अब बचा गुरुवादि गुण जिसमें 20 है।
गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष सलक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छद। गुरु लघु स्निग्ध रूक्ष मृदु कठिन शीत उष्ण विशद पिच्छल मंद तीक्ष्ण सांद्र द्रव सलक्षण खर स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल। गुरु लघु गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष सलक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छद। देखो गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष सांद्र द्रव मृदु कठिन सूक्ष्म स्थूल और विशद पिच्छल सलक्षण मृदु सलक्षण खर स्थिर सर बस इतना और बोलो एक बार लिख के देखो। गुरु लघु और क्या था मंद तीक्ष्ण गुरु मंद शीत और फिर उसके बाद सलक्षण फिर उसके बाद सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद। अब इन दोनों का अपोजिट रहेगा, जैसे गुरु का लघु मंद का तीक्ष्ण शीत का उष्ण सलक्षण का खर सांद्र का द्रव मृदु का कठिन स्थिर का सर सूक्ष्म का स्थूल विशद का पिच्छल। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कोई सा हम बोल रहे हैं, कौन सा हो सकता है? स्निग्ध रूक्ष 10वां स्निग्ध, जिसका हो जाएगा रूक्ष, हो जाए टोटल 20 को। अब ये हो गए सारे शब्द स्पर्श रूप रसगंध। गुरु लघु मंद तीक्ष्ण शीत उष्ण स्निग्ध रूप सलक्षण खर सांद्र द्रव मृदु कठिन स्थिर सर सूक्ष्म स्थूल विशद पिच्छल। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रतिकत्व परिमाण संस्कार अभ्यास। सार्थ गुण का पर्याय क्या है? वैशेषिक गुण, इंद्रिय गुण, स्वाभाविक गुण, अर्थ गुण, विशेष गुण। इसमें सार्थ गुण में वैशेषिक गुण और इंद्रिय गुण मेन है, याद कर लेंगे। वैशेषिक गुण इंद्रिय गुण, वैशेषिक गुण इंद्रिय गुण। सार्थ गुणों के नाम कौन से हैं? अर्था शब्दायो गेया गोचरा विषय गुणा। संख्या नाम 5 होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अर्थात शब्द आयो गेया गोचरा विषय विषया गुणा।
शब्द का क्या मतलब है? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जाना जाता है, केवल आकाश महाभूत में प्रेजेंट होता है। शब्द सिर्फ आकाश में होता है और श्रोत्र इंद्रियों द्वारा, साउंड है, शब्द है ना, तो श्रोत्र इंद्रियों द्वारा सुना जाएगा। ठीक है। शब्द दो होते हैं, ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक। ध्वनि जैसे भेरी, शंख, मृदंग आदि से निर्माण होने वाले शब्द। वर्णात्मक मतलब मुंह से बोले जाने वाले संस्कृत आदि भाषा के शब्द। अप्लाइड इसमें रोग रोगी परीक्षा में स्टेथोस्कोप, हार्ट, लंग साउंड जैसे। स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय द्वारा ग्रहण। जैसे तीन भेद इसके होते हैं, तीन: शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, अनुष्ण शीत स्पर्श। शीत, उष्ण और अनुष्ण स्पर्श। स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, महाभूत में पाया जाता है। स्पर्श गुण किस किस में पाया जाता है? पृथ्वी में, जल में, तेज में। पृथ्वी है छू के, जल को हम छू के स्पर्श करते, तेज अग्नि को भी छू के मतलब स्पर्श करके पता चल जाता है अग्नि है। वायु भी हमें स्पर्श करके जाती है तो पता चलता है। तो ये सब में जो है स्पर्श गुण पाए जाते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु में। जल शीत का वो देता है स्पर्श मतलब भाव, तेज उष्ण का, पृथ्वी और वायु जो है अनुष्ण का। अप्लाइड एस्पेक्ट ज्वर जैसे स्पर्श करके, नाड़ी परीक्षा को छू के, पल्पेशंस को छू के। रूप जो होगा केवल चक्षु इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। रूप है किसी चीज़ का हमें देखना है जो सिर्फ चक्षु इंद्रियों द्वारा हम देख सकते हैं, उसे आँखों से देख सकते हैं। इसके भेद हैं शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल, चित्र। शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल, चित्र कौन कौन से? शुक्ल हो गया, नील हो गया, हरित हो गया, पीत हो गया। शुक्ल शायद सफ़ेद हो सकता है, नीला पीला, रक्त लाल, हरित हरा। कपिस चित्र का मतलब मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा कहीं। शुक्ल, नील, पीत, कपिस, हरित, रक्त, चित्र कौन कौन से हैं? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस, चित्र। शुक्ल हो गया, नील हो गया, पीत हो गया और रक्त हो गया, हरित हो गया, कपिस हो गया और चित्र। रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज में पाए जाते हैं। पृथ्वी सातों रूप पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। सातों रूप कौन कौन से? शुक्ल, नील, पीत और रक्त, हरित मतलब हरित, कपिस और चित्र। जल में आभास्वर, रूप उसका आभास्वर होता है। तेज में भास्वर शुक्ल रूप होता है। अग्नि, पांडु कामला की परीक्षा। रस गुण, रसन इंद्रिय द्वारा ग्रहण मतलब रस गुण है तो हम उसे खा के जीभ पे रखेंगे जब टंग पे, तभी हमें स्पर्श होगा, मतलब वो ग्रहण होगा रस। इसके हो जाएंगे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई, 6 रस आ जाएंगे। पृथ्वी व जल महाभूत प्रेजेंट होता है। पृथ्वी और जल महाभूत प्रेजेंट होता है। पृथ्वी महाभूत सभी रसों में प्रेजेंट होता है, जल महाभूत केवल मधुर रस में होता है। अपने परमेय हो गया, डायबिटीज़ हो गया जैसे। गंध गुण घ्राण इंद्रियां द्वारा ग्रहण करते हैं। घ्राण मतलब होता है नाक, सूंघ कर, सूंघ के हम जो ग्रहण करते हैं उसे हम घ्राण इंद्रियां द्वारा बोलते हैं गंध गुण। इसके भेद दो हैं, सुरभि, असुरभि। सुरभि मतलब सुगंध, असुरभि दुर्गंध। दो से हमें पता चलता है, सुरभि और असुरभि। अप्लाइड एस्पेक्ट द्रव्य व धातु परीक्षा। कर्पूर गंधी, गौमूत्र गंधी। यहाँ पे ये खत्म होता है सार्थ गुण। अब आता है गुणवादी गुण।
शुरुआती को थोड़ी देर बाद करते हैं, इतना हमने याद किया, ठीक है। हिप जॉइंट पढ़ेंगे, इंट्रो है। इट इज़ वेट बियरिंग जॉइंट फॉर लोअर लिम्स, काफ़ी वेट इस पर रहता है। हर महीने 4,000 रुपए का बिल आता है, उसकी सिर्फ दवाई का। तो मेरा तो सिर्फ 1,000 का आता है। Joint is formed like a ball and socket. Therefore, it is called as ball and socket joint, which rotates on more than one axis and is classified under synovial joint. As you can see in this image here, the bone of the hip joint is comprised of head of the femur, which articulates with the acetabulum, which is cup-like depression within the pelvic bone. And the hip joint connects the axial skeleton to the lower extremities and functions to support the static, that is standing, and the dynamic, that is walking, running, and weight bearing, we can say. Now let us concentrate more on the joint capsule of the hip joint, or in simple terminology, we can call it as the capsule of the hip joint. As you can see here, right, the capsule of the hip joint is pretty strong and it is fibrous, but loose enough to accommodate wide range of movements. It attaches to the acetabular labrum, the transverse acetabular ligament, and the intertrochanteric line of the femur. These are the attachments of the hip joint capsule. And if we talk about the ligaments, what we can see in this image here, focus on the ligament known as iliofemoral ligament, the iliofemoral ligament, the pubofemoral ligament, and the ischiofemoral. It attaches to the acetabular. Is pretty strong and it is fibrous, but loose enough to accommodate wide range of movements. It attaches to the acetabular labrum, the transverse acetabular ligament, and the intertrochanteric line of the femur. These are the attachments of the hip joint capsule. And if we talk about the ligaments, what we can see in this image here, focus on the ligament known as iliofemoral ligament, the iliofemoral ligament, the pubofemoral ligament, and the ischiofemoral ligament. All these three important ligaments all act to strengthen the mobile capsule of the joint, or we can say these ligaments strengthens the joint capsule, right? So therefore, it is very much important for us to concentrate
more on the ligaments of the hip joint because these are very, very important for you to know. So first let us concentrate on the outer ligaments. In the outer ligaments, the first one is the iliofemoral ligament. This iliofemoral ligament attaches superiorly to the anterior inferior iliac spine and to the acetabulum and inferiorly to the intertrochanteric line, therefore creating a pretty much Y shape. So what is the important function of this ligament? It prevents excessive lateral rotation and hyperextension of the hip. This is a very important point that you need to highlight, especially when the subject is in the standing position. And another important point you need to remember is it is the strongest ligament of the human body. And second important ligament is the ischiofemoral ligament. And this ischiofemoral ligament originates in the rib of the acetabulum and inserts over islet, especially it prevents excessive lateral rotation and hyperextension of the hip. This is a very important point that you need to highlight, especially when the subject is in the standing position. And another important point you need to remember is it is the strongest ligament of the human body. And second important ligament is the ischiofemoral ligament. And this ischiofemoral ligament originates in the rib of the acetabulum and inserts over the infromedial aspect of the greater trochanter of the femur. And it reinforces the fibrous capsule anteriorly. Therefore, it functions in coherence with the iliofemoral ligament and also fixates the femoral head in the acetabulum. This is the main function. So therefore, we can see that it prevents excessive medial rotation and extension of the thigh. That is the important function of this ligament. And next is the pubofemoral ligament. The name itself says that pubofemoral, meaning it arises from the pubic ramus and merges infralaterally into the iliofemoral ligament, but may also have an attachment to the femoral neck. And it reinforces the fibrous capsule inferiorly, and this ligament tightens during extension and adduction in order to limit abduction and extension of the thigh. So these are the outer ligaments of the hip joint. बहुत सारे बच्चों के लिए ही बहुत सवाल आ रहे हैं कि मैम हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, क्या हम PW इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन का स्कूल ऑफ हेल्थ केयर ज्वाइन कर सकते हैं? और मेरा जवाब जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। And what about the inner ligaments? The first important ligament will be the transverse acetabular ligament, right? You can see here. And this transverse acetabular ligament runs over the acetabular notch and joins up with the inferior end of the labrum. And it is the fibrous structure on the lower part of the acetabulum that converts the acetabular notch into an acetabular foramen. Therefore, it allows the passage of the vessels and nerves into the joint space. And another important ligament is the ligament of the head of the femur. So this ligament of the head of the femur is situated within the capsule, but it is extrasynovial in nature. It arises mainly from the acetabular notch and inserts upon the fovea of the femur. And carefully you can see, let's zoom this image and you can see very carefully that within the ligament, it gives pathway for the foveolar artery to the head of the femur. So these are about the outer as well as inner ligaments of the hip joint. So after discussing about the ligaments, it is very important for us to know about the hip joint movements and biomechanics. You have to focus, one of the very important point related to the hip joint is no muscles attached directly to the femoral head, but many muscles crosses the hip joint and allow flexion, extension, abduction, adduction, internal rotation and external rotation of the thigh. Okay, let us focus on the muscles involved and the movements of the hip joint. The psoas major,
iliacus, sartorius, rectus femoris, and pectineus allows for flexion. But the psoas major, iliacus, and sartorius also aids in abduction as well as internal rotation. And another important muscle called as gluteus, that's adductor longus, adductor brevis, and adductor magnus, along with this gracilis and pectineus, allows for the adduction of the hip joint. And the muscles like obturator muscles, gemellus, quadriceps flexed at a right angle, that is 90 degrees, flexion 140 degrees, extension 15 degrees, abduction 40 degrees, adduction 45 degrees, internal rotation 35 degrees, and external rotation 45 degrees, right? Yeah. So therefore, we know what are the movements which are performed by the hip joint and what are the muscles which are involved in these movements. Now let us concentrate on the blood supply of the hip joint. So let us focus on the image again. There is a beautiful image which is clearly explaining the complete blood supply of the hip joint, right? Here let us focus on two sets of arteries that contribute either majorly or minorly to the vascularization of the joint capsule of the hip. The major contributing arteries are the medial and the lateral circumflex arteries, which are right from deep branch of the femoral artery. So indirectly we can say that the branches from the femoral artery has the major contribution. And the minor contribution singularly of the artery of the head of the femur, right? So these are the two sets of the arteries which gives blood supply to the hip joint. So whenever we talk about especially the blood supply of the femoral head, because which is clinically very important, and the blood supply of the femoral head is quite variable. The three main arteries supply the femoral head. One is the lateral epiphyseal branch of the medial circumflex femoral artery, and the ascending branch of the lateral circumflex femoral artery. Both ascends from deep femoral artery, right? These are the two important branches. This leaves the femoral head vulnerable to avascular necrosis in the presence of the femoral neck fracture, because these vessels are easily ruptured with the femoral neck fractures. And another important artery is the ligamentum teres artery. Imagine yourself high above New York City, looking down at its iconic skyline. Just as the city's skyline inspires awe, so focus here, this ligamentum artery both ascends from deep femoral artery, right? These are the two important branches. This leaves the femoral head vulnerable to avascular necrosis in the presence of the femoral neck fracture, because these vessels are easily ruptured with the femoral neck fractures. And another important artery is the ligamentum teres artery. So focus here, this ligamentum teres artery descends from the posterior branch of the obturator artery and attaches at the fovea. And this artery is commonly disrupted with the dislocations of the hip joint. And remember the point that it is the main blood supply to the femoral head in children. As an anatomical variant, the inferior gluteal artery is the main blood supply to the femoral head in smaller portion of the patients. So this is what is about the blood supply of the hip joint. And what is about the nerve supply? After discussing the blood supply, let us concentrate on the nerve supply of the hip joint. The innervation of the hip joint comes anteriorly from the femoral nerve, which is the main nerve, and inferiorly from the anterior division of the obturator nerve, and laterally from the articular branch of this head in smaller portion of the patients. So this is what is about the blood supply of the hip joint. And what is about the nerve supply? After discussing the blood supply, let us concentrate on the nerve supply of the hip joint.
The innervation of the hip joint comes anteriorly from the femoral nerve, which is the main nerve, and inferiorly from the anterior division of the obturator nerve, and laterally from the articular branch of the sciatic nerve, and posteriorly from the nerve that runs to the quadratus femoris as well as the superior gluteal nerve. But whatever it may be, the main nerve is the femoral nerve. That is what I remember for the innervation of the hip joint. Now let us discuss about the clinical anatomy of the hip joint. And first let us talk about hip dislocation. The innervation of the hip joint comes anteriorly from the femoral nerve, which is the main nerve, and inferiorly from the anterior division of the obturator nerve, and laterally from the articular branch of the sciatic nerve, and posteriorly from the nerve that runs to the quadratus femoris as well as the superior gluteal nerve. So, but whatever it may be, the main nerve is the femoral nerve. That is what you have to remember for the innervation of the hip joint. Now let us discuss about the clinical anatomy of the hip joint. And first let us talk about hip dislocation. So a hip dislocation is a disruption of the joint between the femur and the pelvis, and specifically it is when the ball-shaped head of the femur comes out of the cup-shaped acetabulum of the pelvis, right? So what are the symptoms? Symptoms typically include the pain and inability to move the hip, and the complications may include a vascular necrosis of the hip, injury to the sciatic nerve, femoral nerve, or maybe arthritis. And these dislocations are categorized on either posterior dislocation or anterior dislocation based on the location of the head of the femur. So first let us concentrate on posterior dislocation. Remember the point, guys, 9 out of 10 hip dislocations are posterior, meaning posterior dislocations are pretty common. Here the affected limb will be in the position of flexion, adduction, and internally rotated. इन सभी स्टूडेंट्स ने एक सपना देखा था और आज ये सपना जी रहे हैं क्योंकि इनके अंदर हिट है, लेकिन कई बार उनकी अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। और इस टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मोशन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू मिलने वाले हैं 200 करोड़ तक की स्कॉलरशिप। Rotated, and the knee and foot will be in towards the middle of the body. And most often in such a type of dislocation, a sciatic nerve palsy is present approximately in 8 to 20% of the cases. So posterior dislocation causes injury to the sciatic nerve in approximately 8 to 20% of the cases. And now is about the anterior dislocation, adduction, and internally rotated, and the knee and foot will be in towards the middle of the body. And most often in such a type of dislocation, a sciatic nerve palsy is present approximately in 8 to 20% of the cases. So posterior dislocation causes injury to the sciatic nerve in approximately 8 to 20% of the cases. And now this is about the anterior dislocation. In the anterior dislocation, the limb of the patient is held by the person in externally rotated and mild flexion and abduction. And in such a dislocation, because it is anterior dislocation, the nerve which is present, which is the femoral nerve, so femoral nerve palsies can be present in anterior dislocation, and sciatic nerve palsy can be present in posterior dislocation, but anterior dislocation of the hip joint is pretty uncommon. Now, what are the major causes of hip dislocations here? Dislocation of the hip typically take a high degree of force. Almost about 65% of the cases are related to motor vehicle collisions, with falls and sports injuries being the cause of many of the rest. But major will be motor vehicle accident or dashboard injuries, we can say. And what will be the diagnosis? Let us concentrate on the diagnosis part here. The anterior posterior x-rays of the pelvis,
and anterior, posterior, and lateral views of the femur, including the knee, are ordered for the diagnosis. And the size of the head of the femur is then compared across both the sides of the presses. And the affected femoral head will appear larger if the dislocation is anterior, and it appears smaller if the dislocation is posterior. And a CT scan may also be ordered to clarify the pattern of the fracture. So this is what is about hip dislocation. Femur. It is the longest and strongest bone in the human body. It is a long bone and is situated in the thigh region. Parts: upper end, shaft, lower end. The upper end has a head, neck, greater trochanter, and lesser trochanter. Head. It is the uppermost structure of the femur which projects from the medial side of the upper end. It faces upwards, forwards, and medially. It forms 2/3 of a sphere. It articulates with the acetabular cavity of the hip bone to form the hip joint. Fovea. This is a small depression in the center of the head which gives attachment to the ligament of the head of the femur and is intracapsular. Neck. It connects the head with the shaft of the femur and is about 5 centimeters in length. Neck shaft angle. The neck joins the head and the shaft at an angle of 125 degrees, which enables the lower limb to move clear of the pelvis. I just deleted ChatGPT and Claude and Gemini and Grok. When I'm working on something and need a real answer fast, I don't have time to bounce between apps. 4 apps, 4 logins, 4 subscriptions, and still no clarity. Perplexity treats the entire internet in under a second to give you one answer and with verified sources. Pelvis. It has 2 surfaces. Anterior, which is intracapsular and meets the shaft at the intertrochanteric line. Posterior. Here, the capsule extends till the medial half of the neck and meets the shaft at the intertrochanteric crest. It presents with a groove to lodge the tendon of the obturator externus. It also has 2 borders. Upper, which is concave, and horizontal. It meets the shaft at the greater trochanter. Lower border, which is straight and oblique and meets the shaft at the lesser trochanter. Greater trochanter. It is a large prominence that projects up from the junction between the neck and the shaft and has 3 surfaces and 1 border. The anterior surface is rough. Lateral surface has an oblique ridge. Medial surface presents with trochanteric fossa, which is a depression situated at the posterior-inferior part. Another small depression in front and above the trochanteric fossa. Superior border. Its posterior part presents the apex of the greater trochanter. Lesser trochanter.
It is a blunt conical prominence at the inferior medial part of the junction between the neck and the shaft. It faces backwards and medial. Intertrochanteric line. It is an oblique ridge placed between the two trochanters on the anterior side of the junction of the neck and the shaft of the femur. Attachments. The capsular ligament of the hip joint is attached to the inner part of the entire line. Iliofemoral ligament outside the capsular ligament. Intertrochanteric crest. It is a smooth, blunt ridge situated on the posterior surface of the junction of the neck and the shaft. Quadrate tubercle is a rounded prominence in its middle part. Shaft. The shaft is a long middle portion of the bone. It is broad in the upper and lower parts and narrowed in the middle. It has 3 borders and 4 surfaces. Lateral border. It separates the anterior from the lateral surface. Medial border. It separates the anterior from the medial surface. Posterior border. It is also known as the linea aspera. It is a thick, rough crest in the middle 1/3 of the shaft. It has a medial and lateral lip. The lateral lip is continuous above with the medial tuberosity and below with the lateral supracondylar ridge. Lateral and medial intermuscular septae are attached to the linea aspera on its lateral and medial lips respectively. Anterior surface. It lies between the medial and lateral borders. Lateral surface lies between the lateral and posterior borders. Medial surface lies between the medial and posterior borders. Upper posterior surface. It lies between the spiral line and the gluteal tuberosity. The spiral line is a line that extends from the lower end of the intertrochanteric line till the middle lip of the linea aspera. Gluteal tuberosity is a broad ridge which is continuous below with the lateral lip of the linea aspera. Lower posterior surface. It is also known as the popliteal surface. It lies between the medial and lateral supracondylar lines. Lower end. It is the part that lies below the shaft and articulates with the upper end of the tibia. It is broad and expanded to provide a bearing surface for the transmission of the body's weight onto the tibia. It has 2 prominent masses on each side called medial and lateral condyles, which are separated from each other by a depressed area called the intercondylar fossa. It consists of 2 articular surfaces, the patellar and tibial surface. Lateral condyle. It has twigs with the upper end of the tibia. It is broad and expanded to provide a bearing surface for the transmission of the body's weight onto the tibia. It has 2 prominent masses on each side called medial and lateral condyles, which are separated from each other by a depressed area called the intercondylar fossa. It consists of 2 articular surfaces, the patellar and tibial surface. Lateral condyle. It is stronger but smaller than the medial condyle. Lateral epicondyle is a rounded elevation on the lateral side. Medial condyle. It is more prominent than the lateral condyle. Adductor tubercle is a small projection at the uppermost part. Medial epicondyle is a small elevation which lies below and in front of the adductor tubercle. Hey, have you just passed 12th standard and dream of becoming a pilot? But everyone around you says Tubercle at the uppermost part. Medial epicondyle is a small elevation which lies below and in front of the adductor tubercle. Intercondylar fossa. It is a depressed area between the 2 condyles. An intercondylar line separates it from the popliteal surface. It lies within the capsule of the knee joint but is mostly extrasynovial. Articular surfaces. Anterior,
Inferior and posterior surfaces of the condyles are covered by hyaline cartilage and make up the articular surface. It is divided into two parts. Upper patellar surface articulates with the patella, lower tibial surface articulates with the tibia. Patellar surface. It extends over the anterior surfaces of both the condyles but more on the lateral. It is separated from the tibial surface by two grooves which lodge the menisci during full extension of the knee. Tibial surface. It forms the posterior and inferior parts of the articular surface. It articulates with the condyles of the tibia with semilunar cartilages intervening. Determination of the site. The anterior surface of the shaft is convex. The head lies in the upper end and faces upwards and medially. The condyles lie in the lower end. Ossification. Ossification occurs in cartilage from one primary center for the shaft and four secondary centers for the other ends. Primary center in the shaft appears in the 7th week of intrauterine life. Three secondary centers for the upper end. One for the head appears in the 1st year, one for the greater trochanter between 3 to 5 years, one for the lesser trochanter appears between 12 to 15 years. All unite with the shaft independently between 14 to 18 years. One secondary
the shaft appears in the 7th week of intrauterine life. 3 secondary centers for the upper end. 1 for the head appears in the 1st year, 1 for the greater trochanter between 3 to 5 years, 1 for the lesser trochanter appears between 12 to 15 years. All unite with the shaft independently between 14 to 18 years. 1 secondary center for the lower end appears at the time of birth and unites with the shaft at around 20 years. Clinical correlation. Hip fracture. A hip fracture is a break in the continuity of the upper quarter of the femur. Hip fractures are caused by a fall or a direct blow to the side of the hip. Some conditions may increase the chances, like osteoporosis, cancer, nutritional deficiencies. Types. There are 3 types of hip fractures: intracapsular or subcapital. They occur at the junction of the head and neck and lie within the articular capsule. Intertrochanteric occurs between the 2 trochanters. Subtrochanteric occurs below the lesser trochanter. Fracture of the greater trochanter, fracture of the lesser trochanter. Clinical manifestations: pain around the upper thigh and groin area, shortened leg. The patient may hold the injured leg in a still position with the foot and knee turned outwards. Femoral shaft fracture. This is when there is a break in the shaft of the femur. A great amount of force is required to break the shaft. For example, a road traffic accident. The pieces of bone may line up correctly or be out of alignment. The fracture may be closed or open where the bone pierces the skin. Types. Transverse fracture. Break in a straight horizontal line going across the femoral shaft. Oblique fracture has an angled line across the shaft. Spiral fracture is a fracture line that encircles the shaft like the stripes on a candy cane. A twisting force to the thigh causes this type of fracture. Comminuted fracture is when the bone is broken into 3 or more pieces. In most cases, the number of bone fragments is proportional to the amount of force required to break the bone. Open fracture. The bone breaks in such a way that the bone fragments stick out through the skin or a wound penetrates down the broken bone. Clinical manifestations. Sudden severe pain. Patient will not be able to put weight on that limb. The leg may look shorter and may not look straight anymore. Fracture of the lower end of femur. This type of fracture is seen in elderly patients where the bones are weak or in case of road traffic accidents. The bone can break straight across or into many pieces. This kind of fracture can be opened or closed. Open fractures being more complicated and harder to treat. Clinical manifestations. Pain with weight bearing, swelling and bruising, tenderness, deformity. The knee may look out of place and the leg may appear shorter and crooked. Hip bone. The hip bone. Hip bone. The hip bone is a large, irregular, flat bone which is situated in the pelvic region. 2 hip bones, along with the sacrum and coccyx. 2 hip bones, along with the sacrum and coccyx. Form the bony pelvis. It presents a cavity in its lateral side known as the acetabular
which articulates with the head of the femur to form the hip joint. It has three separate parts: ilium, pubis, ischium. During early life, the three bones are separated by a Y-shaped cartilage, which later ossifies, the place of union being in the walls of the acetabular cavity. Ilium. It is the flat, expanded part above the acetabular cavity. It has the following parts: two ends, upper and lower, three borders, anterior, posterior, and medial, three surfaces, gluteal, iliac fossa, and pelvic. Upper end. This is also known as the iliac crest. It is elongated and expanded. It makes up the upper border of the ilium. The highest point of the iliac crest is situated at a level between the third and fourth lumbar vertebrae. When looked at in the horizontal plane, the crest is concave inward anteriorly and convex inward posteriorly. Anterior superior iliac spine. It is a projection situated at the anterior end of the iliac crest. Posterior superior iliac spine is a projection situated at the posterior end of the iliac crest. The crest is divided into ventral 2/3 and dorsal 1/3 segments. Ventral segment. This presents with outer lip, inner lip, and an intermediate segment. The outer lip presents with a tubercle about 5 centimeters behind and above the anterior superior iliac spine and is known as the tubercle of the iliac crest. The intermediate area lies between the outer and inner lips. Dorsal segment. It extends from its junction with the ventral 2/3 till the posterior superior iliac spine. It presents an inner and outer surface separated by a ridge. Lower end. It is smaller and forms about 2/5 of the articular surface of the acetabulum. Anterior border. It extends from the anterior superior iliac spine till the acetabulum. A small notch is present just below the spine for the lateral cutaneous nerve of the thigh. Anterior inferior spine is a projection in the lower part. Posterior border. It extends from the posterior superior iliac spine to become continuous with the posterior border of the ischium. From above downwards, it presents with posterior inferior spine, greater sciatic notch, ischial spine, lesser sciatic notch. Medial border. It extends downwards from the iliac crest till the iliopubic eminence. It separates the iliac fossa from the sacropelvic surface. Its lower part is smooth, round, and is called the arcuate line. Gluteal surface. It is the outer surface of the bone. It is convex anteriorly and concave posteriorly. This surface is bounded above by the iliac crest, below by the upper border of acetabulum, in front by the anterior border, and behind by the posterior border. It becomes continuous with the posterior surface of the ischium behind the acetabulum. It is split into 4 spaces by 3 lines. Posterior gluteal line. It is the shortest line which extends from the outer lip of the iliac crest 5 centimeters anterior to the posterior superior iliac spine till a point right in front of the posterior inferior iliac spine. Anterior gluteal line. It is the longest line which extends from the middle of the upper border of the greater sciatic notch to become continuous with the outer lip of the iliac crest. Inferior gluteal line. It extends from above and behind the anterior inferior iliac spine and runs down and back till the upper part of the greater sciatic notch. Iliac fossa. It is an area which lies between the anterior border in front, medial border behind, and iliac crest above. It is smooth and concave. It presents with a nutrient foramen in its posterior-inferior part which transmits the nutrient artery. The nutrient artery is derived from the iliolumbar artery. A groove is present between the anterior-inferior iliac spine and iliopubic eminence which lodges the iliopsoas tendon. Sacropelvic surface.
It is situated behind the medial border and is divided into two parts, sacral part and the pelvic part. Sacral part presents with an auricular surface anteriorly and the iliac tuberosity posteriorly. Auricular surface. It lies below and anterior to the iliac tuberosity. It resembles the shape of a pinna of the ear, hence the name. It articulates with the auricular surface of the sacrum. Iliac tuberosity is a rough area below the iliac crest. Pelvic surface. It lies below and anterior to the auricular surface. It is smooth and is continuous with the pelvic surface of the ischium. Preauricular sulcus is a groove which is situated in front of the auricular surface and along the lateral margin of the greater sciatic notch. Pubis. It forms the anterior part of the hip bone and articulates with the opposite bone, forming the symphysis pubis. It also forms an anterior 1/5 of the acetabulum. Parts. Body, superior ramus and inferior ramus. Body. It connects the superior and inferior rami. It has three surfaces, one border, the pubic crest, and the pubic tubercle. Anterior surface faces forwards, downwards, and laterally. The posterior surface is smooth and forms the anterior wall of the bony pelvis. Its upper part is related to the urinary bladder. Symphysial surface is rough and oval. It articulates with the symphysial surface of the opposite pubis to form a secondary cartilaginous joint. It is covered by hyaline cartilage. Pubic crest is the blunt upper border of the pubis. Pubic tubercle is a rounded projection at the lateral end of the pubic crest. तो गाइज़ हमारा सेल्फ चैलेंज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लाइव वीडियो में फिर से वही 3 घंटे की वीडियो के साथ। अभी हम यहीं पे अपना लाइव स्ट्रीम एंड करेंगे। बाय बाय गाइज़, गुड नाइट।